So today we are going to discuss about hyperactivity. In at least 60 to 70% of patients, I would say kids, I won't say them patients, in 60 to 70% of kids who approach us in autism, hyperactivity is a very common problem. Many a time the parents, they will approach us, they will tell us that the child is really very hyperactive. He does not concentrate on a particular subject for a long time. He keeps on shifting his focus from one thing to the other, running about here and there. And again, when we go in the depth of that, hyperactivity can further be divided into two different parts: destructive hyperactivity and non-destructive hyperactivity. When we say destructive hyperactivity, now what is destructive hyperactivity? As per Ayurveda, destructive hyperactivity is there when the child is hyperactive, and along with being hyperactive, he may be hitting others, he may be throwing away the things, he may be banging his own head on the wall, and aggressive kind of hyperactivity, destructive kind of hyperactivity. Now this kind of hyperactivity in Ayurveda is attributed to the combination of Pitta and Vata. In Ayurveda, we go with the theory of doshas: Vayu, Pitta and Kapha, Vata, Pitta and Kapha. And when we are talking about aggressive hyperactivity, now that hyperactivity is with Vata and Pitta. And definitely when a child is aggressively hyperactive, the parents, when they tend to go to any psychiatrist, any psychologist, or anyone whom they are seeking help for autism, they will always request the doctor, the consultant, that please control the hyperactivity of the child. And since in allopathy, majority of the herbs majority of the chemicals which can be used can only work on the conscious mind, they don't have much to work on the subconscious. And luckily, they use risperidone, they use ariprazole and other such salts which reduce the activity of the child, which I would say in simple language will sedate the child to a bit. And definitely when the child gets a bit sedated, the hyperactivity does come down. The parent thing for which parents are approaching the doctor, that does come down with allopathy also, with risperidone, with ariprazole. And personally speaking, if the child is really very destructive, very aggressive, there is no harm in giving them for shorter duration of time if you are not seeking the Ayurvedic help. But if you believe in Ayurveda, if you believe in the power of herbs, if you believe in man and man ke rog, then definitely, even without going for those kind of medications, in Ayurveda there are multiple herbs, there are multiple essential oils which can be used for bringing down the aggressiveness as well as the hyperactivity of your child without a single side effect, without sedating the child. And rather than giving any side effect, I would rather say it is like giving a very positive effect to the child, because any kind of hyperactivity with aggression, specifically when it is controlled with the help of Ayurveda, we work on the subconscious mind. Mind is having two parts: the conscious mind, the subconscious mind. When we talk about the conscious mind is the perceiving mind, the mind which is perceiving the things. When we talk about perception, again, if I am watching a bus coming towards me, but my perception can be really very different. My perception can be that the bus is going to hit me. My perception can be that the bus is going to pick me up. I can perceive different kind of things from the same kind of vision, from the same kind of thing which I am watching. Call now to connect with Autism is a temporary phase in the life of a child if treated timely. patient name, Parth, age 3 years, disease, autism. Chief complaints, speech delay, hyperactivity, irritative behavior, less interaction, less understanding. The parents of the child consulted Dr. Navdeep Sharma on April 2023 at 1:09 p.m. and felt the scope of treatment to work for the child. He did not respond clearly and showed irritative behavior most of the times. करो आ जाएगा वो.
कलर करो, वेरी गुड पार्थ, कलर करो। नो, इस हैंड से कर, वेरी गुड, इसके अंदर रख दो, वेरी गुड। पापा का हैंड, दीदी का हैंड करो, हैंड, चलो, वेरी गुड, खाओ, वेरी गुड। हेलो पेरेंट्स, पार्थ हेलो करो, हेलो करो। ये पार्थ है, मेरा बेटा, 4 साल का होने वाला है। लास्ट ईयर जुलाई में हम डॉक्टर नवदीप शर्मा सर के यहाँ पहुँचे थे। हमें एक सर ने मेरे बताया था सर के बारे में। हमने सोचा भी नहीं था कि आज 9 महीने में पार्थ मम्मा पापा हमसे बोलेगा इतनी जल्दी। हम तो मतलब बड़ा एक माँ पेरेंट्स के लिए एक रहता है कि कब हम मम्मा पापा सुनेंगे पार्थ के मुंह से। आज पार्थ मम्मा पापा और विद सेंस सब कुछ बोलता है। भगवान की कृपा से और सर की मेडिसिन और सर के गाइडेंस से आज 9 महीने में पार्थ एक नियर टू नॉर्मल लाइफ जी रहा है। और स्कूल में भी पार्थ प्ले ग्रुप में था। अभी जस्ट 15 दिन पहले ही स्कूल में मैम ने बोला कि पार्थ को हम नर्सरी में भेजेंगे। और जो सर ने जो लाइफ में हमारी खुशियाँ दी हैं, बहुत एक पेरेंट्स के लिए इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि उसका बच्चा इतनी जल्दी और इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाए, एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच हमारी लाइफ में इतनी बड़ी खुशियाँ देने के लिए। थैंक यू एंडी निरोगम। Call now to connect with world's senior most Ayurvedic. Another recovery story of autism treatment. Patient name Vivan, age 4.5 years old, disease autism. Chief complaints: speech delay, less understanding ability, inexpressive, sensory issues, lack of focus. The parents of the child consulted Dr. Navdeep Sharma on 27 November 2022 at 11:00 am and felt the scope of treatment to work for the child. The chief complaints were speech delay, unable to write, and sensory issues. The child could not write by himself. He was also not very socially active. Throughout the treatment, significant improvement was seen in the child. He started writing on his own, gave answers, and also became active. He started interacting more and gave answers instantly. His focus also saw an improvement. He also participated voluntarily in activities and also excelled academically. Instant responses were also seen within a few months of treatment. With improved attention span, he became quick in recognizing and mind games as well. He was able to interact more with peers, participate in class, and also understand things in a better way. हाय, मेरा नाम प्रिया है एंड मेरा बेटा है 5 साल का होने वाला है। एंड मुझे नवदीप सर से मेडिसिन लेते हुए मोर देन 1 ईयर हो गया है। एंड आई हैव चेंज लाइक आई हैव सीन इमेंस चेंज इन माय सन। लाइक जब हम यहाँ पे आए थे तो ही वॉज लाइक वो एक वर्ड ही बोलता था। एंड जब से हमने मेडिसिन शुरू की है एंड मेडिसिन के साथ साथ शिरोधारा भी इसकी मोर देन 1 ईयर से चल रही है। एंड विद कंटिन्यूटी ऑफ दिस मेडिसिन एंड ऑल उसमें ड्रास्टिक चेंज है। जैसे अभी वो सब कुछ अपनी चीज़ें 99% अपनी चीज़ें वो बता पाता है ईजिली। एंड दैट टू दे स्टार्टेड मेकिंग फुल सेंटेंसेज ऑल्सो। क्लास में भी अकेडमिकली ही इज़ गोइंग सुपरबली ऑसम। ही हैज स्कोर्ड 88% इन हिज लास्ट टर्म। एंड जहाँ पे जब वो नर्सरी में था ही जस्ट स्कोर्ड 55%, नॉट इवन 50%। एंड अभी जस्ट टर्म ए में ही इज़ इन जूनियर केजी। अभी टर्म ए में उसके 88% नंबर आए हैं। नाउ ही हैज स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो। पहले वो मतलब पकड़ के लिखता था, पेंसिल पकड़ के, उसका ग्रिप भी प्रॉपर नहीं था, बट अब वो लिखने भी लग गया है। प्लस मुझे जो मेडिसिन से जो मुझे मेन फ़र्क दिखा है दैट इज़ सेंस। जो मुझे चाहिए था कि सेंस में थोड़ी सी डेवलपमेंट। पहले उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कोई घर में आ रहा है जा रहा है, वो जस्ट कमांड वाइज ही चल रहा था। लाइक ही स्टार्टेड फॉलोइंग माई कमांड्स, लेकिन अपने दिमाग से वो कुछ नहीं कर रहा था। बट जब से मेडिसिन लेना शुरू किया आफ्टर 3 मंथ्स मुझे ज़्यादा चेंजेस दिखे हैं। 3 मंथ्स में धीरे धीरे चेंज आए। अब विद इन अ ईयर तो ड्रास्टिक चेंज है। जैसे उसको देख के आप बोल ही नहीं सकते हो कि दैट ही हैड माइल्ड ऑटिज्म, तो उसको माइल्ड ऑटिज्म ही था। बट अब वो माइल्ड ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम से भी निकल गया। अब जस्ट उसके थोड़े थोड़े सिम्टम्स रह गए हैं। एंड वी आर स्टिल इन टच विद नवदीप सर। वी आर स्टिल टेकिंग द मेडिसिन। उनकी जो भी गाइडलाइंस है, बीट डायट, बीट उनका यंत्र, वी आर डूइंग दैट रिलीजियसली एंड आई मीन इट।
विद दैट हम उनको हीलिंग म्यूजिक भी सिखाते हैं, जिससे बच्चा इंटरनली भी हील होता है। मेडिसिन हम दे रहे हैं। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दी मेडिसिन एंड फैसिलिटीज। द डॉक्टर्स आर एवरी टाइम अवेलेबल। और मुझे हफ्ते में, 1 साल से ज़्यादा हो गया, मुझे हफ्ते में 1 कॉल ज़रूर आता है यहाँ से, दैट यू नो वेदर द थिंग्स आर गोइंग राइट। विवान के बारे में दे आस्क कि वो कैसा चल रहा है। तो लाइक दे आर इन टच, द होल टीम इज इन टच विद मी मोर देन 1 ईयर। मेडिसिन यहाँ पे टाइम से आ रही है, हमें घर पे डिलीवरी मिल जाती है। जब हमें आना होता है नवदीप सर के, हमें कॉल्स आ जाते हैं दैट यू नो वो अवेलेबल है इफ़ यू वांट टू मीट। तो द एज अ क्रक्स आई एम सेटिस्फाइड विद द मेडिसिन ऑल्सो एंड विद द स्टाफ ऑल्सो। थैंक यू। Call now to connect with world's senior